Hello everyone. Today I am going to teach you about what is motion. So we are going to just discuss very basic explanation about motion. So what is motion? By the term itself, motion we believe it is a movement of an object. Okay? Or in simple language, I can say that we consider an object to be in motion when it changes its position with respect to time. Means any object is in motion when its position changes within a certain span of time. So let me write it down for you also. Object is in motion when it changes position with time. Okay. Let me give you a very basic example. Let me consider a point A here, and there's a point B at a certain distance of, let's say, about 10 minutes. Okay. And let's say point B is 10 minutes away from point A, and I'm considering there's a person standing on point A. Okay. Okay. So in this situation, if I say that in 10 minutes that person reaches from point A to point B, तो हम क्या कहेंगे? That within the span of these 10 minutes, when a person changed his position from point A to point B, that particular person came into motion. हमें ये नहीं पता वो कैसे पहुंचा point B पर from point A, चल के गया या उड़ के गया, कैसे पहुंचा, we doesn't consider that. हम बस ये देखेंगे कि हाँ वो A से उसकी position change हो गई B पर in 10 minutes. So within that span of time, he came into motion. Okay. It was a very simple example. Let me take another example also. बस में जाते हुए पैसेंजर को बाहर देखने पे क्या पता चलता है? उसे लगता है कि बाहर like all the roadside trees are moving backward, while the person outside the bus sees the bus moving along with the passengers. Okay. एंड यहाँ पे दूसरा सिनेरियो देखते हैं. तो द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन द बस सी हिज फेलो एट रेस्ट. बस में उसके साथ में जो दूसरे पैसेंजर मूव कर रहे हैं उन्हें वो मोशन में नहीं दिखेगा. ओके. One more example for your clear understanding I'll take. Suppose this is my home. I'm just making a simple. Okay. So if I say that my school is 7 kilometers away from my home, okay, in south direction. मैंने क्या बोला? मेरा स्कूल मेरे घर से 7 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में है. ओके. सो व्हाट आई एम सेइंग हियर, आई एम locating the position of my school with respect to my home. Okay. So here school is an object and its position I am referring with respect to my home. So here my home will be the reference point. Okay. Through which we are describing the location of object school. Okay. I think it's quite easy. So मेरा घर reference point हुआ, and reference point को we also say it's an origin. Okay. Now let's move to our next topic. So our next topic is motion along a straight line. It's the simplest type of motion.
Okay, motion along a straight line. So let me start it with an example. Okay, just so I've drawn this path, and let us suppose O, which the point which I have drawn, it is an origin. Okay, so consider a person who travels from point O, that is origin. Okay, and the path covered by him is, suppose initially he goes from point O through point C and B till point A. Okay, and after reaching point A, he again comes back from point A through point B till point C. Okay, now in this situation, we will consider certain quantities which will describe the situation. Okay, so our first quantity is distance. I hope you all would be knowing about what is distance. So distance is the actual path covered by an object. Okay, it is a numerical quantity which does not describes any direction of the motion. It just calculates how much path, how much, here in this situation, how many kilometers that person has traveled in simple numerical form. So as I told you, the person first goes from point A, passing through point C and point B till point A, and again from point A he goes back to point C, passing through point B. So what will be the total distance covered by that particular person? So the total distance covered will be the distance covered from point O to point A and the reverse distance from point A to point C. Okay, which will be, here I have mentioned the distance in kilometers. So difference between point O and point A will be 60 kilometers. So this is 60 plus distance between point A and point C will be 60 minus 25, right? Which will be 35. So the total distance covered by the object will be 95 kilometers. That is very simple, right? Now another quantity we take as displacement. Okay, now what is displacement? It is the shortest distance measured from initial to final position of an object. Okay, what is displacement? Shortest distance measured from initial to final position of object, or I can say in simple language, it is the change in position. We will not consider the actual path covered by the object. We will only consider the difference between the final and the initial position of the object. Okay, in this situation, how we will calculate the displacement? What was the original position of the object? It was origin, right? And what was the final position after traveling the whole path? The object came back to point C after going to point A once and then returning from that particular point. He came at last to point C. So final distance will be the difference between point O and point C, right? Initial position is point O and final position is C. So this distance will be the displacement. So our displacement will be OC. And what is the distance between OC? From the graph, we can easily get it's 25 kilometers. Okay. It's a very simple numerical just to make you understand about these terms distance and displacement. If you want, I can take one more simple example. Okay.
So this time we'll consider a rectangular field, okay, in which the person travels. So let me draw a rectangle for you. Suppose this is a rectangle. Let me take this point as origin. I'm denoting it with O, okay, and I'm naming the edges like this. And let me take the sides as 10 meter, 20 meters this side AB, then 10 meter along this side. Since it's a rectangle, the opposite sides will be equal. You all might be knowing that. And this I'm taking 20 kilometers, sorry, meters. Okay. Now, in this example, we'll again calculate the distance and the displacement. And let me tell you, suppose the condition I'm telling you, the person is standing on point origin, and this person covers the entire rectangular area and comes back to point O. So in this situation, what will be our distance? Simply the total path covered will be the sum of the sides of the rectangle, right? So it will be 10 plus 20 plus 10 plus 20, that is 60 meters. Okay. So the actual path covered by the object will be 60 meters. And another quantity was displacement. What will be the displacement in this case? What was the initial position of the object? It was point O, the origin. And after completing the whole rectangle, where did the object reached finally? At the same point, point O, right? So the initial and final position of the person is same. Hence, our displacement will be 0. Simply say the displacement in 0. And yeah, don't forget to put the unit here, which is meter. Okay. Now, before moving forward, or actually I have completed today's topic, let's just see a simple numerical as well, so that we can brush up the whole thing we have studied. The numerical, let me read it out for you. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meters in 40 seconds. So what will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds? ओके, सिंपली इसमें पूछा है, बताया है पहले कि फार्मर है वो एक स्क्वायर बाउंड्री पे मूव करता है जिसकी साइड है 10 मीटर. ठीक है, हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है, सपोज दिस इज अ स्क्वायर. मैंने आपको सिमिलर एग्जांपल बताया भी था, सो इट वुड बी इजी फॉर यू. मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ ओ एज एन ओरिजिन, जहाँ से वो स्टार्ट करेगा. ठीक है, एंड let me name other points as A, B and C. Okay. और इस स्क्वायर की हर एक साइड है 10 मीटर. ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, चारों साइड इसकी 10 मीटर की होंगी. एंड क्वेश्चन में बोला है कि वो फार्मर पूरे स्क्वायर फील्ड का बाउंड्री कवर करता है, दैट इज all the four sides he covers in 40 seconds. मतलब according to the question, perimeter of the square, okay,
which is sum of all sides of square. ठीक है, which is 40 meters. This is the distance covered by the farmer in 40 seconds. तो जब 40 मीटर्स वो 40 सेकंड्स में कवर करता है, तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि हर एक साइड जो 10 मीटर की है वो कवर कर देगा 10 सेकंड्स में, राइट? वील डिवाइड इट सिंपली बाय 4. आई बिलीव आप लोग को समझ में आ रहा होगा. कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, मैसेज मी. नाउ व्हाट इज asked in the question? Magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds. तो हमें सबसे पहले क्या पता लगाना है कि 2 मिनट और 20 सेकंड्स के बाद में वो फार्मर की पोजीशन कहाँ पे है, फाइनल पोजीशन. ओके, तो पहले जो हमें टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स, इसको हम कम्प्लीटली सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, कितना हुआ? 2 minutes means 120 seconds plus 20 seconds, which will be 140 seconds. Okay, हमने टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया. एंड अब हम पता लगाएंगे कि वो फार्मर की 140 सेकंड्स के बाद में फाइनल पोजीशन क्या है. तो हमने जैसे निकाला कि हर एक 10 मीटर की साइड वो कवर करता है 10 सेकंड्स में, एंड टोटल स्क्वायर वो कवर करता है 40 सेकंड्स में. तो सिंपली हम निकाल सकते हैं कि अगर फार्मर स्क्वायर का पहला राउंड 40 सेकंड्स में कवर करता है, दूसरा राउंड भी उतना ही टाइम लेगा, तो मतलब 80 सेकंड्स में वो वापस पॉइंट ओ पर आ जाएगा दूसरा राउंड कवर करके, एंड देन तीसरा राउंड कवर करेगा तो अगेन वापस वो कितने में आएगा, 120 सेकंड्स में वापस ओ पर आ जाएगा, राइट? 40, 80, 120. ओके, नाउ 120 सेकंड्स पे वो वापस पॉइंट ओ पर है और हमको निकालना है उसकी पोजीशन 140 सेकंड्स पे. ओके, 120 से जब वो ये 10 मीटर कवर करेगा तो यहाँ पे होगा 130 सेकंड्स में, राइट? क्योंकि हर एक 10 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करता है 10 सेकंड्स में, राइट? यहाँ पे हमने निकाला हुआ है. एंड देन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब वो जाएगा तो 140 सेकंड्स में वो पहुंच जाएगा पॉइंट बी पर. ओके, सिंपल है. तो हमारी फाइनल पोजीशन हो गई पॉइंट बी एंड इनिशियल पोजीशन थी हमारी पॉइंट ओ. तो हमको निकालना है मैग्नीट्यूड, राइट, ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जैसा मैंने आपको बताया था, इट्स द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द फाइनल पोजीशन. एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इसका? दिस ओ बी. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ सिमिलर चीज दिख रही है, राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, ओ बी निकालना बहुत आसान है, हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएंगे. ठीक है, यूजिंग द साइड्स ओ एन ओ बी एंड ए बी हम ओ बी की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे? सो बाय hypotenuse theorem OB will be calculated as OB is under root OA का होल स्क्वायर प्लस AB's whole square. Okay, which can be calculated as, what is the value of OA? It's 10, so it will be 100 plus AB's value is also 10, so it will be 100
Okay, so it will become under root 200, which we can also write as 2 into 100, right? तो 100 का अंडर रूट लेंगे तो 10 बाहर आ जाएगा and remaining 2 will be inside the under root. So 10 root 2, and what will be the unit of this? Meter. This will be our magnitude of displacement. आप चाहें तो root 2 की वैल्यू भी लगा सकते हैं, बट इतना आंसर लिख देंगे तब भी काफ़ी है. ओके, तो गाइज आपको शायद मैंने बहुत इजी एग्जांपल्स दिए हैं, आपको समझ में आया होगा. ओके, मोशन के बाकी डिटेल्स मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूंगी. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.